इस तो बार 5 मत मारना। नहीं 5 या इस बार 4 मत मारना, 5 या 4 मत मारना। we'll just get right into the video. But before that, let me just tell you that this video is sponsored by One Football app. One Football is my go to app whenever I need to know anything related to world football. So, in case you want to follow a club, maybe read latest articles related to football, or maybe follow a particular player, you can get everything on the app. So, don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. आज के इस वीडियो में मैं दो दोस्त लेके आने वाली हूँ और दोनों ही मैनचेस्टर यूनाइटेड अल्ट्रास हैं. आज मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर सब बात होगी, उनके ट्रांसफर्स के बारे में, उन लोगों के बारे में, नए मैनेजर के बारे में. तो सब कुछ बात करेंगे और उनके साथ कुछ फन गेम्स भी खेलेंगे. तुमको बहुत ही मजा आने वाला है. लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ. So, Mohawk, we are starting with the first segment, and the first segment is this. That is transfer songs. तो इसमें क्या है, आई जस्ट टेल यू द रूल्स. तो इसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं तुमको ना एक गाना दूंगी, एंड हाँ, वो जो गाना है उसके हिसाब से यू हैव टू टेल कि कौन सा ट्रांसफर जो एक सिचुएशन है वो रहेगा, उस पर बहुत अच्छे से लगेगा. और ये सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड का होना चाहिए. डन. अच्छा। डन, 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 डन। लेट्स गेट इनटू दिस. तो तुम्हारा जो फर्स्ट है क्लू वो ये है. तो ये वाला जो आई गाना है ये किस पे लगता है? आई थिंक पॉल पोग्बा। आई न्यू द आंसर, आई न्यू, मुझे लग रहा था यही होगा आंसर. तो ये पॉल पॉगबा पे जाएगा और किसी पे नहीं. पॉल पोग्बा पे भी जा सकता है, एंगल डी मारिया पे भी जा सकता है, वैसे तो यही 2 हैं। और अगर मैग्वायर चला जाता है तो उस पे भी चला जाएगा। ओह मैग्वायर अगर गॉड. जाता है तो। चलो ठीक है, 3 प्लेयर्स तो आ गए और उसका रैंकिंग भी पता चल गया कि किसके हिसाब से किस पे लगेगा ये. डन. चलो इस पे आई थिंक फुल पॉइंट्स हैं क्योंकि आई थिंक सभी का ही यही आंसर होने वाला है. यस। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन व्हिच इज दिस. ये कौन से ट्रांसफर साइनिंग पे जाता है? आई थिंक रोनाल्डो टू यूनाइटेड, जब वो वापस आया था। मतलब परफेक्ट हम्म. सिनेरियो है। या. मतलब होम कमिंग और वो रिसेप्शन, ब्रेस, सब कुछ, तो आई थिंक उसके हिसाब से आई थिंक इट्स रोनाल्डो। परफेक्ट परफेक्ट, ये तो लग ही रहा है ये इसी पे जाएगा. अगले दो देखते हैं कि कौन से होने वाले हैं. योर थर्ड क्वेश्चन इज दिस. तो 4 दिनों का प्यार और रब्बा किस पे जाता है? ओके, दिस इज 4 दिनों का प्यार और अब्बा, लंबी जुदाई। आ, वैसे ये रोनाल्डो के ट्रांसफर सागा पे मैच कर सकता है अभी जो चल रहा है। हाँ, कि अभी जब सेकंड कि टाइम वो आया. हाँ. हाँ, तो 1 साल के लिए ही आया और फिर शायद इट विल बी द एंड ऑफ लव स्टोरी बेसिकली, हम्म. फॉर हम्म. गुड, क्योंकि इसके बाद तो वापस आना नहीं है। तो आई थिंक या. हाँ, रोनाल्डो सागा पे जा सकता है ये। तो ये वाला भी हम रोनाल्डो को देने वाले हैं, राइट? यस, यस, यस। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन, एंड द लास्ट इज दिस. तो इट्स दिस, द लिरिक्स जो लिखे हैं वो वाला. अरे यार, एक दिन उसे भुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा मैं, चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को, जा उसे बता दे। यार ये तो आई थिंक या तो मार्शियल पे डाल दो या मैग्वायर पे डाल दो या रेशफोर्ड पे डाल दो। किसी पे भी डाल दो, क्योंकि आई जस्ट वांट टू फॉरगेट द डे व्हेन वी साइंड दीस प्लेयर्स। बेसिकली रेशफोर्ड को तो हमने प्रमोट किया था, बट हाँ, हम्म. मार्शियल एंड मैग्वायर के बारे में तो मैं भूलना चाहता हूँ कि हमने क्यों साइन किए ये। परफेक्ट, बहुत बढ़िया. यू हैव प्लेड दिस गेम. मजा आया. एंड आई थिंक अगर वही मैं बता रही थी ना कि अगर दिव्यांश भी होता तो शायद उसका भी इनपुट मिलता इन चीजों पे. दैट्स व्हाई वो दो लोग में इसलिए फन रहता है. बट आई लव्ड योर आंसर्स. नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड सेगमेंट, एंड दैट इज रैपिड यस। फायर. तो आई ओके। जस्ट आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, सो यू नो यू आंसर अकॉर्डिंगली. शैल वी मूव टू श्योर, श्योर, दिस? श्योर। So we are on to the second round, that is rapid fire. Let's get into this. तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ यू कुड सेल वन प्लेयर आउट ऑफ द करंट स्क्वाड, हु वुड इट बी? आउट ऑफ द करंट स्क्वाड, या. आई थिंक इट हैज टू बी स्कॉट मैकटोमिने, बिकॉज मतलब जो हमें मिडफील्ड में चाहिए ना, वो स्कॉट मैकटोमिने प्रोवाइड नहीं करवा सकता। ही इज नॉट अ बॉल हम्म. कैरियर। वो हम्म. पैचेस में वर्क करता है। वी नीड अ प्लेयर हु कैन लीड द टीम। ही कैन नॉट लीड अ टीम। ही इज नॉट द प्लेयर वी कैन रिलाई ऑन इन द मिडफील्ड, और मिडफील्ड पूरी हम्म. टीम की हार्ट एंड सोल होती है। तो अगर वही या. कमजोर है तो फिर उसका क्या मतलब बनता है? तो बेसिकली आई वुड गो एंड सेल
स्कॉट मैकटोमने। Scott McTominay. Okay, let's move on to the second one. This is a pick one option that you have to pick. मैं तीन options दूंगी. You have to pick one. First option is let Ronaldo go. Second option is keep him for another year. Third option is contract extension, so he should retire with United. थर्ड वन यार ये तो ये तो बिना सोचे समझे थर्ड वन। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट नितिका, आई डोंट वांट टू मेक रोनाल्डो स्टे फॉर जस्ट 1 year. I mean, if he's Hmm, staying, give him the contract extension, because hmm, he will be the one who will be helping you as a leader, scoring goals and all. अगर वो रुकता है hmm, तो hmm. letting him go after this year, if he leaves, if he stays and आपने उसका एक साल एक और यूज किया और फिर अगर आपने उसको एक्सटेंशन नहीं दिया और ऐसे ही जाने दिया, that would be highly disrespectful. That is true and also he is the leader like you said और ऐसा लीडर अगर एक स्क्वाड में होता है not only he can grind results but वो हम्म। एक winning mentality provide करता है and I think Ronaldo is that guy for United. If United let him go तो थोड़ा काफी loss हो सकता है उनके लिए. Let's move बहुत। on to the third question. Out of 1 to 10, 10 being the highest, how confident are you with Eric Ten Hag given responsibility to bring glory back to United? I think the last part is very difficult. Glory back to United, that is the most difficult part, because आज के टाइम में मैनेजर्स को इतना टाइम दिया नहीं जाता है to Hmm. implement their ideas in the team, because the fan base is very impatient. Hmm. But if you're asking about my point of view on this Eric Ten Hag situation, I am pretty confident. You can give a 10 on 10, from my side, Wow. Wow. because he is someone who is a visionary. He is someone who takes time but builds a better team, and Hmm. he's been in this whole scenario for the last 12 years, more than 12 years. So he knows what And he's he doing. has developed such good players यार ये भी नहीं है कि Exactly. तो that इसी is को going भी to ले आए help. हैं। हाँ ये हाँ वही मतलब तो तो I'm more confident than I was when Mourinho arrived, to be very honest, because Mourinho was wow. sacked by Chelsea when he had a rough patch, and then we Hmm. won. But Mourinho lost that charm when he was sacked by Chelsea, for the second time. So Hmm. because he's young and he plays exciting football, and he's not just a manager, he's a coach as well. अगर आपने उनके Hmm. clips देखे होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि how hard he's working on players to make them realize कि Hmm. कहाँ गलती हो रही है and what they need to Hmm. improve. Very true and I didn't expect you'll give 10. I thought maybe थोड़ा वो skeptical रहेगा दिमाग नहीं, में but then quite I'm positive not. you are about I yeah. mean, I'm not saying that he will bring glory back to the club, because that's the most difficult part. Hmm. But you asked me about how confident I am regarding Eric Ten Yeah, Hag. So definitely. I'm more than confident about him. दैट्स गुड दैट्स गुड चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा ना वैसा है कि कुछ ड्रामा टाइप्स होने वाला है वो ये है Hmm. कि जैसे हमने ना पिछले साल एक ही चीज सुनी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम के बारे में कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम सुनते रहते Hmm. थे तो यू मोहक यू आर द मैनेजर ऑफ द क्लब एंड तुम ड्रेसिंग रूम में जाते हो व्हाट इज दैट 30 सेकेंड स्पीच यू आर गोइंग टू गिव क्या बोलने वाले हो उस टाइम पे उनको कि जस्ट टू गेट देम स्ट्रेट कि भाई कर क्या रहे हो सो व्हाट इज दैट स्पीच यू गोना गिव I think there will be a lot of abuses, to be very honest, to certain players, because you need to make them realize who's the boss in the dressing room. If the players You are are in taking the the dressing charge, room. Just, yeah, carry I on. mean, 30 seconds. 30 seconds. Oh, all right. So, first of all, lads, we have had a pathetic season. Last year the crowd expected a lot from us, but you guys shut yourself on the field, and because of you guys we are not playing in the Champions League. We are playing in the fucking Europa League, and Europa League is not the league where we deserve to be. At least, you deserve to be in that league because you were shit. But the fans deserve better, the club deserves better, and the people who are spending money, who are not attending the games but are paying for your jerseys, for your signatures, for your items that you've been signing on for years, and that's all. But we, as a unit, we need to perform well, and I don't want to see any excuses. I don't want to listen any excuses from anyone. I want all 3 points tonight, and you all guys have to take the responsibility, not me. वाओ! आई थिंक कभी-कभी इसको जिसको ना मैं एडिट करके उनको भेज दूँगी कि भाई दिस इज़ समथिंग जो उनको सुनाओ इफ दे आर नॉट प्लेइंग वेल सो दिस इज़ वेरी गुड दैट यू डिड। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द रैपिड फायर राउंड इज़ दैट 2 प्लेयर्स दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि इस सीज़न में वो बहुत इम्प्रूव करेंगे। I think one is Sancho, that's for sure, because Sancho का पहला साल था, and हुँ, थोड़ा सा मतलब
शुरू में उसको बहुत दिक्कतें आई थी, बहुत मुश्किलें आई थी, बट ये सीजन सैंचो विल शाइन, एंड आई थिंक दिस विल बी अ वेरी क्रूशियल ईयर फॉर the likes of Harry Maguire. I don't know why, because Wow. I'm not a huge admirer. I'm the biggest critic, if you know, if I have to say, of Hmm. Harry Maguire. And but there is this something in Eric Ten Hag that can make Harry Maguire work in this system and at this club. And if he does that, I think every fan in United, would love that, because we have spent a huge Hmm. sum of money on him, and we haven't got that return back. So Hmm. I think these two will be the ones whom I'm expecting to perform well. In this season, that's a Yeah. very good answer. I think Jadon Sancho is somebody जिस पे काफी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बट बहुत जल्दी रख लिया आई थिंक सबने, तो बहुत प्रेशर क्रिएट हुआ। Hmm. ऊपर से पूरा का पूरा टीम ही नहीं परफॉर्म कर रहा था यार पिछली बार, तो इसलिए वो Exactly. होता नहीं है कि इतना पैसा पे किया है, वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, कैसे दिखेगा। तो अभी रोनाल्डो पे भी सब क्वेश्चन कर ही रहे थे, इवन देन ही स्कोर 24 गोल्स, दैट्स स्टिल इनक्रेडिबल व्हेन यू हैव द स्क्वाड दैट यू गॉट। तो लोग पूरा सिचुएशन कंसिडर नहीं करते एंड वी बिकम जजमेंटल टू सून। But you did a Hmm. very good rapid fire. Now we are moving on to the last segment, and that Hmm. is नॉर्मल बातचीत। अब सारा यूनाइटेड के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं All रिलेटेड right. टू ट्रांसफर्स एंड एवरीथिंग। आर All यू right. ऑन? I'm on. I'm always on. Yeah. All right. So your first thing that I wanted to ask you was that टेन हैग के अंडर पहला साइनिंग हो गया है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट साइनिंग? I think looking at Liverpool's backline, like looking at City's backline, those two teams have world-class wing backs, full backs, whatever you call them. United के case में we have a very poor, structureless and a lethargic backline. The likes of Luke Shaw, the likes of Alex Telles, Dello, Van Bissaka. You can't make them come. You can't compare them with the likes of Reece James or Trent Arnold or uh, Robertson or Cancelo, because or oh, and Walker. Sorry to say, and Walker as well. Uh, because यूनाइटेड ने जितने गोल कंसीड किए हैं लास्ट सीजन, they were due to the individual errors that were being made by our wing backs and our center backs. But एंड wing back डिस्पाइट जितना ज़्यादा सेव hmm, किया है, डिस्पाइट डेहिया ने hmm, जितना सेव किया है, उसके अलावा कितने गोल्स आई थिंक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने the कंसीड GD किए zero. हैं, तो The या GD zero, that reflects everything how poor we were defensively. And if it wasn't for the saves made by De Gea, and if it wasn't for the goals scored by Ronaldo and obviously Bruno, I think we would have been outside top 12 or top 13. We would have struggled to get into the top 10, obviously. And Malasia is someone who is very young. I'm not going to put too much pressure on him that he has to perform in his first season. No, he's just 22-year-old lad who has just came from a league that is not so uh, competitive as compared to that of Premier League. It will take time, for him to adjust to the atmosphere, adjust to the pressure, adjust to the physical side of the game that Premier League brings to the table. But at the same time, it depends on the manager as well, how the manager is going to या make him play, and how the manager is going to inherit him in the first team. So Eric Ten Hag is someone who usually work well with the youngsters. If you look at his Ajax squad over the years, he has always developed players, and he was the one who was scouting Malasia for a long time. Before he joined, there's this famous clip of Eric Ten Hag when they were playing Feyenoord, and he said that this kid is special, this kid is really good. या So, considering all those factors and considering our current manager, and the stature that he has, I think it is a very good signing, and this signing has been made considering our future, not our current season. दैट इज ट्रू एंड द थिंग इज दैट यू सेड दैट वन थिंग राइट, बिकॉज एक क्वेश्चन जो है ना, जो हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि क्या यूनाइटेड सही ट्रांसफर साइनिंग्स कर रहा है। क्योंकि अगर हम कंसिडर करें, अभी मार्टिनेज के बारे में भी बात चल रहा है एज अ सेंटर बैक कि उसको लेके आएंगे, Hmm. देन उसके बाद एरिक्सन को लेके आए हैं, और जिनके साथ भी तुम लिंक अप हो रहे हो, बिकॉज एवरीबडी थॉट कि सबसे पहले वो जो मिडफील्ड का इशू था इन द फॉर्म ऑफ स्कॉट मैकटोमिनी एंड फ्रेड, सबसे ज्यादा और सबसे पहले वो वाले पोजीशंस फिल अप करेंगे ताकि एक लिंक अप प्ले हम देख पाए टीम में। बट Hmm. एकदम साइनिंग्स वैसे हो रहे हैं कि जो एक्चुअली में एग्जैक्टली उस चीज को टच नहीं कर रहे। सो डू यू थिंक दिस इज राइट और दिस इज द वे टू गो? I think Nitika, we are very much focused on our midfield, not so much on the number 6 role.
बट वी आर Hmm. वेरी मच फोकस्ड ऑन आवर मिडफील्ड. आप अगर हमारी साइनिंग देखोगी, दूसरी साइनिंग जो एरिक्सन की है वो मिडफील्ड साइनिंग है. एंड Hmm. वी नीडेड बॉल कैरियर्स. वी डोंट हैव बॉल कैरियर्स. वी डोंट हैव क्रिएटिव प्लेयर्स एक्सेप्ट फॉर ब्रूनो. आप Hmm. ब्रूनो को निकाल दो मिडफील्ड में से, क्योंकि आगे आपके पास सेंचो है जो क्रिएटिव है. Other than Bruno and Sancho, you have no one to create. Rashford Hmm. is not a one. Rashford is not the one who can create. He can finish, True. but he can't create. Martial is the one who can carry the ball, but you can't make him fit in the midfield. He's a forward. You need Hmm. players who can help the team. Take the ball from the defense and carry the ball forward to the to the front line. True. So Ericsson is someone who've been signed by Eric Ten Hag. Now the the most important signing of this season is Frankie De Jong. Now बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि why United are so much after Frankie De Jong even when he Hmm. is refusing, time after time, time after time. Hmm. The reason is there are not so many players of Frankie De Jong's caliber. And you look at multiple signings that have been made this summer, you know, who have come for more than 80-85 million. Frankie De Jong is Hmm. coming for 70 million upfront fee, straight upfront fee of Hmm. 70 million, and then 15 to 20 millions of add-on fee. तो वहां जो आपको ये बार्गेन मिल रही है ना, अल्टीमेट बार्गेन ऑफ दी विंडो. क्योंकि आपने सुन लिया डेक्लिन राइस का प्राइस कितना है. दे आर डिमांडिंग 120 मिलियन, ठीक है ना. Yeah. दैट दैट्स कंप्लीट बुलशिट. No Hmm. one would pay 120 million for Declan Rice. Calvin Phillips was someone who never wanted to come to United because सिटी एंड लीड्स की राइवलरी नहीं है वो, जो यूनाइटेड और Hmm. लीड्स की राइवलरी है. सो दैट वाज Yeah. अंडरस्टैंडेबल. एंड आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स. यस, वी वर इंटरेस्टेड इन कैल्विन फिलिप्स, बट एक ही आंसर आया था एक बार, एंड दैट वाज आई वोंट जॉइन यू गाइस बिकॉज कंसिडरिंग आवर हिस्ट्री. तो Hmm. इट वाज फेयर एंड स्क्वायर. फ्रेंकी डियोंग विल बी द मार्की साइनिंग फॉर अस दिस सीजन. Hmm. एंड मार्टिनेज बट के यार केस में बंदे ने भी कितनी बार मना कर दिया है कि नहीं आना है ये सब, तो उसके वजह से ये नहीं दैट इज द लगता है कि बेस्ट यार। पार्ट. That is the ओके। best part of the transfer, Nitika. Sometimes you need to make them, understand how you're going to fit them in the system, how important they will be in this new project. If the player is feeling unwanted at his current club, which he is, if you look at, I, या डेफिनेटली। Laporta has said multiple, I mean, आज भी उसने statement दिया है कि I am not interested in selling Frankie De Jong, but we have to look at our financial structure as well. So directly, you are, मतलब indirectly you are trying to convey the message ना, be ready, you know, the sword या। might fall on your head. ठीक है ना. तो फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि इवन यू हैव डन एवरीथिंग. आप मल्टीपल टाइम्स आकर ये भी बोल चुके हो कि आई लव दिस क्लब, दिस वाज माय ड्रीम क्लब, आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले फॉर बार्सिलोना, बट स्टिल द क्लब वांट्स टू सेल यू. ठीक है, आउट ऑफ हेल्पलेसनेस है या जो भी है, बट दे आर सेलिंग यू ना. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो आई थिंक एक और जरूरी चीज ये है कि फ्रेंकी डियोंग के केस में कोई दूसरा क्लब है नहीं ट्रांसफर मार्केट में. हाँ, शुरू से ही इट्स मैन यूनाइटेड जिसके साथ पूरा लिंक चल रहा है, बातचीत आगे तक बढ़ी हुई है इसको लेके। या। तो इसीलिए वी आर प्लेइंग द वेटिंग गेम हियर बिकॉज वी डोंट हैव टू रश. वी डोंट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखो अगले 15 दिन में पता चल जाएगा फ्रेंकी डियोंग टू यूनाइटेड होगा या नहीं होगा. बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विंडो. आफ्टर 25th या। जो भी साइनिंग आएगी इट विल बी पैनिक बाइज, ठीक है ना. 25 तारीख तक का जो समय है, बेसिकली अभी आपका 15 तारीख तक का जो समय है ना, उसमें आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हाउ सीरियस यूनाइटेड आर एंड व्हाट आर द टारगेट्स वी आर ट्राइंग टू गेट ऑन बोर्ड. हम्म। नहीं, दैट्स ट्रू। एंड अभी तक जो चेंजेस किए हैं, जो ट्रांसफर्स आ रहे हैं और जो गए हैं, आई थिंक दैट्स अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। तो अगर यही माने कि मान लो यू वर द स्काउटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर वॉट एवर इट इज, तो तुम कौन से वो जो दो साइनिंग्स है वो पिक करते उस टाइम पे कि यार ये तो मेरे को करने ही करने हैं? वो कौन से ऐसे पोजिशन होते जिनको तुम फिल करते? यार मैं बिना सोचे समझे बिसूमा उठा लेता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज यार। दैट वाज अ बार्गेन. 25 या। मिलियन बिसूमा जैसे प्लेयर के लिए, कम ऑन मैन. उफ। हाउ उफ। हाउ कैन यू मिस दैट. एंड हम्म। हैट्स ऑफ टू कॉन्टे, हैट्स ऑफ टू स्पर्स, बिकॉज दे ब्रिलियंट। दे साइंड अ सीरियस अ डायमंड, दूसरी साइनिंग अगर मैं बात करूं तो आई ऑलवेज वांटेड रफीनिया, प्रॉपर प्रॉपर विंगर, गोल स्कोरर,
a player who puts a shift, and will help the team in the defensive areas. आप उसका defensive work rate देखो, it's far far better than any of the winger, you know, Hmm. because he played under Bielsa, and Bielsa demanded that side of the game Hmm. from his players. So पूरा टाइम भागते रहो, पूरा टाइम वो exactly, इंटेंसिटी शो करते workhorse, रहो. या. workhorse जिसे हम बोलते हैं ना, तो basically Rafinha is that, and if Barcelona gets him on board, so it would be a brilliant signing for them. Hmm. Seriously, these were the two players that I was targeting, and maybe you can say कि आप ग्रेविनबर्च को ला सकते थे, आप कमारा को ला सकते थे, नो, Hmm. आप और भी यूलियन अल्वारेस को ला सकते थे नंबर 9 पे, अगर लाना था, डेवलप करना था तो। Hmm. मैं मतलब चाहता था कि यूलियन अल्वारेस आए, बट आप नहीं, क्योंकि आपके पास कुशन नहीं है ना बेसिकली Hmm. चैंपियंस लीग का। प्लस चलो, जूलियन अल्वारेस के केस में कुशन की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको, आप कन्विंस करते वो आ जाता, बट तब आपके पास मैनेजर ही नहीं था कन्विंस करने Hmm. वाला, एंड सिटी ने पहले ही वो डील फाइनलाइज कर ली उसके साथ, तो वो वो थोड़ा भी नहीं गड़बड़ हुआ. सीन हो गया। या. तो चलो ये तो हो गया कि किसको स्काउट करते हैं. अब ऐसे हम्म। कौन से 3 प्लेयर्स हैं दैट यू वांट कि यूनाइटेड अभी के अभी बेचे. द सेकंड पार्ट इज कि वो ना आपको सीजन में, जो कि डेवलपमेंट फेज में थोड़ी हानिकारक पहुंचाने वाले हैं, इफ आई कैन पुट इट दैट वे. मतलब ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट भी हो हम्म। सकता है, लेकिन दे आर नॉट पुटिंग इन द एफर्ट एंड ब्रिंगिंग द, वो ड्रेसिंग रूम का पूरा एटमॉस्फेयर वो नेगेटिव कर रहे हैं. तो वो कौन से 3 प्लेयर होंगे दैट यू वुड वांट टू सेल इमीडिएटली. आई थिंक मैं जिनको बेचूंगा वो एक्चुअली ड्रेसिंग रूम के नेगेटिव एटमोसफियर की वजह से नहीं, बट एक प्लेयर को मैं उसके बचे हुए करियर की वजह से बेचूंगा, एक दो प्लेयर को बेचूंगा बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर यूनाइटेड। तो पहला वाला जो प्लेयर है जिसको मैं देखना चाहता हूँ फुटबॉल खेलते हुए, दैट इज फिल जोन्स, बिकॉज द गाय really deserves to play football. He has suffered so much while being at United because उसकी गलती नहीं है यार, you can never blame a player for the injuries that he has या. faced. ट्रू. आप नहीं नहीं ब्लेम कर सकते बिकॉज कभी कभी किसी की बॉडी नहीं देती साथ, तो blaming someone for their injuries, come on, who likes to get injured, who likes to be on the bed for 18 months, or या. for 12 months, no one does. तो I think Phil Jones को जाना चाहिए. He's 30, he can still give 2 or 3 years to some other club, हुँ. some हुँ. some mid-table club in the Premier League. I think he should take that opportunity if the offer arrives. Then United हुँ. should definitely sell him. As I said, McTominay, I don't see him, but yes, I've read reports that Ten Hag sees him as a important player. Sometimes the manager looks and finds something in that player जो हमें समझ में नहीं आ रहा. That's why they are the That's manager, we are true. not. Yeah, obviously. Yeah. So हाँ, this is that one signing that I would I mean this is that one player I would like to sell because of lack of हुँ. talent, and obviously I would sell Van Bissaka. We need an upgrade. We are not competing with Norwich or Fulham or any other हुँ. club. We are competing with Liverpool, City, Chelsea. Look at their fullbacks and look at our fullbacks. I mean, the guy is good in 1v1 situation, but collective defensive areas में Yeah. he's very poor. Offensive areas में तो माशाअल्लाह भाई उसका तो कुछ पता ही पता नहीं रहता, तो नहीं, I think Van Yeah. Bissaka would be the third person. Hmm. No, fair enough. And I think Phil Jones' wala answer is very different. I didn't expect that you will go for that, but I understand, where is that coming from? Because if I think about it, Keita भी एक ऐसा player है हमारे लिए जो काफी time Hmm. injured रहा. And questions उठते हैं यार कि तुमने इतना पे किया था, not Hmm. performing. But again, जब भी चाहिए होता है, जब जरूरत होती है, Hmm. he brings his A game out, and I think we should give him time. Hmm. That's why इस बार भी काफी लोग बोल रहे थे let Keita go. बट आई थिंक ही इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिवरपूल बिकॉज एनीवे हमने मिडफील्डर्स कारवालों के बिना कोई और Hmm. साइन किया नहीं है. सो लेट्स सी वो क्या होगा. बट लिवरपूल के लिए नहीं, मैन यूनाइटेड की बात हो रही है इधर, एंड बोथ कांट को एग्जिस्ट. सो लेट्स टॉक अबाउट रोनाल्डो नाउ. तो अभी अभी कुछ सुनने में आया था, वी ऑल नो दैट वो ट्रेनिंग फर्स्ट सेशन में नहीं था, लेकिन अभी वो Hmm. कि वेज कट होने की वजह से वो भी एक फैक्टर है कि शायद रोनाल्डो वांट्स टू गो आउट ऑफ द क्लब. डू यू थिंक दैट कैन बी द रीजन. Yeah, wage cut will not be an issue for Ronaldo. Come on, he earns या. way more from social media than, you know, I mean, yes, his main source of earning, or you can say, uh,
the professional source of earning, more professional source of earning is football, because he's performing, he's pushing his limits even at the age of 37, Yeah. 38. So I think, but the statement was pretty blunt. Hmm. I don't see Ronaldo leaving United for the sake of his reduced wages. Nahin. It is the lack of Champions League football, it is the lack of structure, that Hmm. has made him think about his future. And still there is a chance that he might stay. I'm not saying he will leave for sure, There's Hmm. I haven't read a single report that says Ronaldo is pushing for the move. Every report says that Ronaldo might He leave. said that कि Ronaldo, कंसिडर कर लेना अगर कोई मेरे yeah, लिए क्लब आता है तो yeah. या So, and Mhm. there are reports that Jorge Mendes is pushing for the move, not Ronaldo. And now you Hmm. can say that, but he is his agent. But come on, agents का तो काम है ना वो basically. Hmm. अगर एजेंट हाथ पाथ रखा बैठा रहेगा, क्योंकि Yeah. हम क्या सुनते हैं, हम हर विंडो में सुनते हैं ना कि भाई क्लब के साथ लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी प्लेयर्स के एजेंट इधर उधर वर्क कर रहे हैं डील्स के लिए, अगर बेटर डील मिल जाए Yeah. तो, बिकॉज Hmm. दैट्स देयर जॉब. एंड ऑब्वियस सी Yeah. बात है, ही इज अ सुपर एजेंट, ही वुड वांट हिज प्लेयर टू परफॉर्म इन द चैंपियंस लीग, सो वो Hmm. ढूंढ रहा है क्लब चैंपियंस लीग के लिए. तो आई Hmm. थिंक वो वेज कट वाला तो आई डोंट फाइंड इट लॉजिकल. Hmm. तो अगर आई नो दैट यू ऑब्वियसली वोंट वांट रोनाल्डो टू गो, कोई भी चांस नहीं है उसका, बट व्हाट इफ द सिचुएशन अराइजेस, तो कौन सा ऐसा क्लब है जिसको देख के तुम थोड़ा सेटिस्फाई हो जाओगे कि चल ठीक है यार यहाँ चला जाए, कोई इशू नहीं है? I think being a United fan first, because I'm a United fan first and then a Ronaldo fan. या या Uh, I cannot see him, and I don't want to see him in Chelsea colors. I don't want to see him in Premier League. If he's leaving या United, leave Premier League. Don't move to फिर any कोई any फर्क other ही नहीं club. पड़ता, फिर तो चाहे जहाँ मर्जी जाओ या Huh. And considering his future and considering his age, I think the best possible destination would be, and the best destination has to be Bayern Munich. या Let Lewandowski leave for Barcelona, let them sign Ronaldo if he wants to leave. Obviously, he would want to leave if the offer arises, arrives, that Bayern Munich are interested. Then definitely a guaranteed shot at a Bundesliga title, DFB Pokal, या and a very high chance of winning the UCL as well, because they have a very stable team. They are not वेरी like United or any other club, because we are not participating. And म्यूनिक के पास एक एडवांटेज ये भी रहता है कि म्यूनिक के लीग में इतना कंपटीशन नहीं है, तो दे डोंट फेस दैट सॉर्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस एंड मेंटल स्ट्रेस, या जो कि आपको प्रीमियर लीग में देखने को मिलता है. इवन इन ला लीगा, लास्ट ईयर आपने देखा कि गेम्स काफी क्लोज थे. एंड बुंदेसलीगा उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो आई थिंक बायर्न म्यूनिक वुड बी द परफेक्ट डेस्टिनेशन. एंड व्हाट अबाउट पीएसजी? हाँ यार, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं ना कि रोनाल्डो मेसी को साथ खेलते देखना है, बट आई डोंट वांट दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट That might not sound serious now when you think of I this. want to remember this rivalry, as a rivalry. I don't want to see Yeah, them finishing their career by playing together in a same exactly. team. Come on, man. Mm. That, I mean, we used to see Ramos tackling Messi, and now all of a sudden we are watching, Exactly. Ramos playing alongside Messi. Come on, who likes that? I don't like that. Who, I mean, आप बार्सिलोना फैन से पूछोगे, आप मैड्रिड फैन से पूछोगे ना, वो कहेंगे भाई हमें अजीब लगता है देखने में, Yeah. बिकॉज हमने इतने साल उनको साथ में आपस में लड़ते लड़ते देखा है, ठीक है देखा ना. है. एंड नाउ ऑल ऑफ Yeah. अ सडन पैम्परिंग हो रही है पिच के ऊपर, ऐसे और हग्स करके फोटो आ रहे हग्स हैं ये करके सब. फोटो आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड दैट इज नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, Mm. पिक्चर्स में जो दिखता है, दैट इज नॉट द रियलिटी. ठीक है, दे आर प्रोफेशनल्स, दे मूव ऑन दिस एंड दैट, बट 15 साल एक दूसरे के अगेंस्ट इतना गुत्थम गुत्थी वाला गेम रखने के बाद फिर एकदम से आप कैसे Yeah. एक्सपेक्ट करोगे ना Mm. कि सब हंकी डोरी है, सब अच्छा अच्छा है. आई डोंट नो. Yeah. एंड आई डोंट वांट दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Mm. नो फेयर इनफ, एंड वही चीज है ना जिसको देखते बड़े हुए हैं हम लोग, वो सडनली खत्म हो जाएगा एंड देन वो रोनाल्डो मेसी वाला राइवलरी इज ऑफ, फिर इट्स गॉन. फिर पता है, फिर डिस्कशन इस बात पे नहीं होगा कि इंडिविजुअल कौन बेटर खेला. फिर पता है, फिर डिस्कशन किस बात पे होगा कि साथ में खेलते में कौन बेटर खेला. दैट वुड बी द सेंटर पॉइंट ऑफ द डिस्कशन. सही बता रहा हूं मैं. एंड दैट वुड मेक
थिंग्स इवन मोर टॉक्सिक। कॉम या इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, कितना कुछ बात हाँ, करोगे, फिर एक ही टीम के स्टैट्स निकालो, अगर एक ही टीम में फिर एक डिफरेंसेस ही आ रहे टीम हैं में तो फिर देखोगे चलता है। कि इसने इस टाइम पे इसको पास नहीं दिया, पता है फिर ये भी या क्रिटिसिज्म होगा, बिकॉज हाँ, ही वुड हैव स्कोर्ड, मतलब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पहला सेशन ले लिया है एरिक टेन हैग ने। डू यू और डिड यू सी सम चेंजेस इन द प्लेयर्स, और कुछ ऐसा डिफरेंट फीलिंग लगा वो सारा कुछ देख के, इफ यू हैव सीन समथिंग रिलेटेड टू द फर्स्ट सेशन दैट हैज हैपेंड? सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई इट्स गुड टू हैव अ कोच, नॉट जस्ट अ मैनेजर। या। यू नो, जो देख रहा है, साथ में वर्क कर रहा है, प्लेयर्स की कमियां कहाँ हैं। आज ही एक सेशन देख रहा था मैं जिसमें ही वाज टेलिंग द प्लेयर्स टू मूव द बॉल क्विकली, राइट फुट से लो, राइट फुट से लो, राइट फुट से लो, एंड ब्रूनो वाज कीप ऑन playing with his left foot, and he said, हम्म। "Yeah, we are making too many mistakes, and these were the mistakes that we kept on making last season." हम्म। और अगर आप ट्रेनिंग में गलती करोगे ना तो फिर आप पिच पे सही नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रू। हम जैसे एग्जाम्स देने जाते थे, तो हम रात भर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम जो गलतियां प्रैक्टिस सेशन मतलब जैसे करते हैं ना लिखते में, हम्म। या फिर हम जो लिखते हैं फिर हम वही बोलते हैं, तो हम्म। वही चीज है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप गलत ही प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो फिर आप वही गलती गेम में जाके रिपीट करोगे। तो आई थिंक इट इज एग्जैक्टली। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू मेक द प्लेयर्स अंडरस्टैंड कि क्या डिमांड कर रहा है गेम, और वो क्या हम्म। कर रहे हैं पिच के ऊपर। तो आई थिंक दैट्स अ होल डिफरेंट सिनेरियो, And एंड आई एम that's so प्रीटी मच good, you know. इम्प्रेस्ड। Yeah. Yeah, exactly. And I think this is that change that everybody needed. जब रैंकनेक आया तो suddenly everybody thought वो quick fix होगा, अरे हाँ। suddenly we will get to maintain that. And I think it's not the rivalry between Liverpool हम्म। and United that I'm saying this, but I think it's हम्म। good that you did not get to that Champions League level, because wherever you are right now, I think that is going to help you a lot to improve. अदरवाइज फिर वो चीज़ हो जाती है, अच्छा खुला टाइम दिया जाएगा आई थिंक मैनेजर को, अगर दिया जाता है तो, बिकॉज़ अ लॉट इज़ हम्म। डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स। सो हम्म। डू यू थिंक ओनर्स का फैक्टर अभी कहीं आपको ठीक लग रहा है कि यार ठीक है, टेन हैग को साइन किया है, देखो अब अभी टाइम देते हैं कि नहीं, या अभी भी दे आर द लाइक विलेन्स और द मॉन्स्टर्स इन यूनाइटेड्स? I mean, Glazers has to go. Glazers needs to go. They are not fit for a fan base like United, a club like हुँ, United, ट्रू। because this is not any other club. This is Manchester United. We were the powerhouse, and all of a हुँ, sudden we are struggling to make an impact in world football. Struggling to qualify for Champions League on regular basis. हम 3 साल लगातार चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, 2 साल करते हैं, तीसरी साल मिस आउट कर देते हैं। And it's not just depends on the man, owners, to be very honest, but the structure that has been developed by the club, that has been हुँ, decided by the owners. I mean, those are the ones who are making the decisions. Those are the ones who were making the decisions by bringing wrong people in the backroom staff. अगर मैं बात करूं तो the likes of Ed Woodward and the likes of हुँ, Matt Judge and all. तो ये एक चीज है जो कि इम्प्रूव हुई है इस सीजन, बिकॉज रिचर्ड आर्नल्ड के आने से एक चीज जो इम्प्रूव हुई वो है कि फुटबॉलिंग डिसीजंस में हमारे जो चेयरमैन है, उनका वो हुँ, सॉरी जो, हाँ मतलब आप कह सकते हो, तो उनका अब वो नहीं है, से नहीं है, ठीक है ना। तो अब हुँ, यहाँ पर आप अगर डिसीजंस की बात करो तो दैट हैज बीन टेकन बाय जॉन मार्टा, द डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल फॉर अस, यू नो। तो हुँ, वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी बन चुके हैं इस सेटअप में, एंड जैसे यू सेड कि United not qualifying for the Champions League is a good thing for United, and I completely agree with that. Because imagine if we would have secured Champions League football, then हुँ। all these changes, the right decisions for selecting the हुँ। manager and all wouldn't have happened. अरे तो लगता कि इतने कंपेटिटिव लीग में हम टॉप 4 में तो आ ही गए हैं जिस तरीके से भी खेले, तो वो जो गलतियाँ होती है ना, वो कहीं न कहीं उसपे पर्दा पड़ जाएगा, एंड देन द होल फोकस इज़ शिफ्टेड ऑन कि अगला सीज़न देखा जाएगा, अब इतना तो इम्प्रूव और हो वो ही अगला गया है। सीजन और खराब होता, पता है, अगला सीजन और खराब हुँ, होता, बिकॉज हुँ, आप मैनेजर वो लेकर आते जो आपको चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करवा पाता अगले साल भी। तो एग्ज़ैक्टली। बेसिकली दैट वुड हैव बीन हुँ, पोचेटिनो, ठीक है ना। बिकॉज हाँ, एवरीवन वाज लाइक कि ही इज अ प्रीमियर लीग प्रूवन मैनेजर, वी डोंट नीड टेन हैग, हु इज टेन हैग, डेवलपमेंट नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए हैं। और ये बेसिकली अगर आप अपॉइंटमेंट देखोगे ना मैनेजर्स की जो की हमने, अदर देन आपका ओले गुनार सोल्शायर, तो हमने रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजर ही साइन किए हैं, हमने फुटबॉल ओरिएंटेड मैनेजर साइन नहीं किए। हुँ, आप अगर डेविड मॉयस को देखोगे, डेविड मॉयस का अपॉइंटमेंट क्यों हुआ था, बिकॉज ही केप्ट
Everton in top 10 for consecutive years. So True. basically that was a result oriented, selection. उसके Mm, बाद आए लुई वेनाल, ही डिड वेल विद नेदरलैंड्स इन द वर्ल्ड कप. फिर हमने उनको साइन किया था बिकॉज ही टुक नेदरलैंड्स टू द सेमीफाइनल्स. Another mm. result oriented manager. Then we went for Jose Mourinho, the right manager at the wrong time. Exactly. ठीक है ना? if Well we put. would have if we would have gone for Mourinho right after Sir Alex, that would have been the perfect selection of manager. Mm, But हम उसको तब लेकर आए जब हम ऑलरेडी दो मैनेजर्स को सैक करके उनकी उनकी टीम से सफर कर रहे थे. एंड Mourinho इज नॉट समवन हु कैन बिल्ड अ टीम इन एन ईयर अगर उसको बैकिंग नहीं मिल रही है mm, तो. एंड Mourinho always demanded players, he never got those players. mm. तो एक और फेलियर. उसके बाद आता है एक ऐसा इंसान जो कि फैन फेवरेट था. ठीक है ना? वो वाज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड, बट हु न्यू हाउ टू मेक द फैन बेस क्वाइट, यू नो और हाउ टू कंट्रोल द फैन बेस, बिकॉज So व्हेन how यू to आर अ get the लेजेंड fan base back, टुगेदर. हाँ, आई Ye- मीन यू, to यस. exactly. हाँ, तो बेसिकली दैट्स व्हाट made Solskjaer survive for so long, you know. True. And yeah, I mean, I wanted Solskjaer to be successful, to be very honest. That would have been a beautiful story, Mm, us winning mm. something with our legend. What else do you want, as a fan? Yeah. A legend coming back to the club, making you Yeah. win trophies. That would have been the perfect story. Even Chelsea fans, wanted that with Lampard. You Lampard, yeah. guys, would want that if Obviously. Gerrard joins you guys. Mm. So I mean, it's a dream for every fan. But it has Legend. become a double-edged sword now, Yeah, You never it know has. that is It it going to has. happen or not? Yeah, because It has. that's your legend that we are talking about, and suddenly you want them to succeed, but then जो past record रहा है, how it has been, and not every great legend can be a great manager of your particular Exactly. club as well. So that's Exactly. that's quite scary when we think about it. जो Xavi is doing quite well in Barcelona, and let's Hmm. see आगे Exactly. तक क्या होगा. But obviously, I understand why you wanted Ole to succeed in the club. And now we have got Ten Hag, Yeah. basically a manager who demands more from himself. You know, Hmm. and if a manager is demanding more from himself, then definitely he would. I mean, he would Demand just double beat the from the shit out players. of Yeah, his players. exactly. If they are not performing, he'll just slender them. He'll just butcher them, and that's what Hmm. we want. To be very to put these पलकों पे players बिठा के to their थोड़ी रखना places. है यार सबको एग्जैक्टली वो ही तो हो रहा था आई थिंक यूनाइटेड के साथ सब प्लेयर्स Exactly. को वहां रखा हुआ है एंड परफॉर्मेंसेस शिट मैनेजर सो एक्चुअली जमीन पे है और जो प्लेयर्स हैं वो राजगद्दी पे बैठे हुए थे. That's what was happening at United, and to be या very honest, and this was the change we needed. This is what we have got, and I think it's a request for all, to all the United fans who will be watching this video. n- ये सीजन जो आने वाला है, do not judge Eric Ten Hag. We might not qualify for top 4, but it's not top 4 that we need. It is a team that we need to build a you better need an future for us. identity you need an identity which I think Exactly. United doesn't have. Yeah. Yeah, at this point of time, we don't have a playing style. We don't have characters. We need to find those characters. We need to find our playing style. It took Mm. Liverpool 3 years, to be very honest, before they actually Yeah. got to know how we will play regularly under Klopp. They Mm. saw those glimpses, but those glimpses came in patches. One, 2 games, then 4 game बिना उस glimpse के, because Mm. they won or they draw, but the charisma was not there. The effort Mm. was not there. But धीरे धीरे टीम बिल्ड होती चली गई, एंड ट्रस्ट मी, it won't take so long, as compared to that of Liverpool's time, because Liverpool का तो squad बहुत ही ज्यादा खराब था. We have a Mm. very decent squad in comparison to that of Liverpool जो जब क्लॉप आया था. He had to Mm. overhaul the entire squad. एक एक प्लेयर उसका आज जो उस टाइम पे था, सिर्फ दो प्लेयर सरवाइव करें. One is James Milner and the other one is Jordan Mm. Henderson, and no one else. So keep calm, trust the process, and trust the manager. And if you want Mm. to slender someone, slender the players, not the manager, because those are Mm. the ones who deserves our uh, basically Backlash. criticism, backlash, or even hate, if I would say, because it has been so long. Rashford has been part of this club for 6 years. Marshall, same. Same man. You know.
So these players need to step their standard, not the manager. He'll be joining a different club, a different league. So let's see how it goes. थोड़ा टाइम देना तो बनता है। आई थिंक परफेक्टली समड अप। आई थिंक दिस इज व्हाट एवरी यूनाइटेड फैन जो भी इस चैनल को फॉलो करता है या फिर मोहक के चैनल को फॉलो करता है, दे वुड नो दैट टाइम इज समथिंग दैट यू नीड टू गिव। अगर क्विक फिक्सेस चाहिए थे, आई थिंक यूनाइटेड वही करता आ रहा है अभी तक, और उसका Hmm. रिजल्ट तुम्हारे सामने है। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव पेशेंस। और अभी सबसे पहले हमारा फ्रेंडली होने वाला है, एंड आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग। इतना टाइम हो गया यार फुटबॉल देखे उस वहां तरीके पे से। इस सो बार पांच मत मारना। पांच नहीं, या इस बार चार मत मारना। पांच या चार मत मारना। मत मारना। नहीं, वो ना कभी-कभी होता है, वो हमेशा तो नहीं हो सकता, कुछ-कुछ टाइम होता है। अभी यूनाइटेड उस तरीके से गोल्स नहीं खाएगा, ना करने देगा, सो लेट्स सी क्या आई होता है, होप। बट ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर नेक्स्ट सीज़न एंड थैंक यू सो मच फॉर Same कमिंग। to you as well. I mean, गाइज़ या I don't have to wish you all the best because you guys have all the luck. Already नहीं। you've got Klopp. नहीं, मैं अभी भी टच वुड कर रही हूँ, कुछ पता नहीं है। टाइम ये वक़्त का ना बदलते फुटबॉल में कभी Hmm, नहीं पता है कब क्या पता हो नहीं जाए। रहता। सो एग्ज़ैक्टली, सो दैट्स व्हाई फुटबॉल में तो आई कांट बी श्योर कि एंड में भाई यही होने वाला है। सो नेवर, स्पेशली इन प्रीमियर लीग, सो यू नेवर नो। बट Exactly. मोहक के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर तुम फॉलो बाय चांस नहीं कर रहे हो तो जाके करो। थैंक यू मोहक फॉर कमिंग। लेट्स मीट अगेन एंड टॉक मोर अबाउट यूनाइटेड Sure. एंड लिवरपूल एंड व्हाटएवर देयर इज़ इन फुटबॉल। सो थैंक यू। Namaste, guys. Bye.